This is not the way to X-ray a baby's chest. This is the worst possible thing you can do to a baby in order to get a chest X-ray. So the whole baby is being exposed, and then a small box is drawn around the part that is of interest, and then that is the part that's presented to the referring doctor. So the medical establishment is not responsible for the massive dose that the baby has gotten, but perhaps the profession should be taking more care of what it is teaching. So you see, there are three things wrong with this chest X-ray of this baby. One is that it's done supine. Another is it is done with the head turned to the side, so the airways are twisted. Another is that the angulation is lordotic, which means the rays are angling up, which means the ribs appear as lines rather than curves. Okay, so going to the procedure, we can see the baby here lying down. You can see that the light is extending out beyond all of the sides, and you can see that there are images of fruit and vegetables on the baby's shirt. Now, this is a really bad idea. Get the clothes down to one known layer. This baby's wearing two lots of clothes, and we can see that this is not the first time this baby has been X-rayed. It was X-rayed a few minutes ago when there was the thing around the baby's neck. There was a piece of metal that is rectangular shape, and there were several beads connected to some kind of lace that went around the neck. Now we can see the workers, the people who are holding the baby. Their hands are in the primary beam, so they get a primary beam dose. Now that is totally unacceptable. And we see they're not wearing any lead protection. The scatter from the baby and from their arms and from the table is about 30 times more than for a well-collimated image, where the exposure is limited to the area of interest, i.e. the baby's chest. Now we go to the exposure. Now the exposure he recommends is 52 kilovolts at 1 MAS. That is totally unacceptable. That's what we might use for a finger. We might have to use that exposure for a neonate, a newborn baby, but we'd not do it to a 1-year-old because that is the wrong exposure. Get the exposure up towards 70 kilovolts. That means you can cut down the MAS to 1/4 to 1/6 of what you were using here, and therefore reduce the radiation dose from the exposure alone to something like 1/4 of what it would otherwise be. Now you can look at the actual tutor, the way the procedure went. It's in Hindi, so you may not understand all the words, but you need to understand that this is a practice going on in India. And it's incredibly unfortunate that this is the example that the students have to follow. So I don't know what you can do about it, but X-ray classes is doing the wrong thing for everyone. देखिए, बच्चों को पहले आपको ऐसे पकड़ना है. एक घर के किसी मेंबर को बोलिए हाथ पकड़ लेगा और एक मेंबर पैर पकड़ लेगा बच्चे का. एकदम स्ट्रेट होना चाहिए बच्चा, और इस प्रकार से आपको स्ट्रेट करना है. ये सुपाइन व्यू है. 100 सेंटीमीटर फ्रॉम टेबल टॉप रहेगा फिल्म फोकस डिस्टेंस, और ये डीआर सिस्टम है जी का, और ये एक्सपोजर हो गया तो पहला इमेज आ गया है. तो इस इमेज में मेरे को वो तावीज दिखाई दे रहा है, तो मैं और एक बार ले लूँगा. 1 MAS 52 kV एक्सपोज दूंगा. यहाँ पे देखिए फिर से एक्सपोज देने जा रहा हूँ. बहुत कम डोज है, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही करते हैं. इतना कम डोज में मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता है, तो इसको आप ले सकते हैं. बस आ गया इमेज. अब आपको इसको ठीक करना है. सीधा कर लीजिए. इमेज में ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छा आया है. थोड़ा सा
आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ये इसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए चेस्ट सुपाइन व्यू। इसको मैं कैजुअली किया हूँ वीडियो को, लेकिन आपके लिए बहुत काफी मददगार होगा। ये अचानक एक चेस्ट एक्सरे आया था बच्चे का, तब मैं आप लोगों के लिए कर लिया हूँ। अब क्या करना है, मेरे को इस इमेज को सेंड करना है अपने फूजी के सॉफ्टवेयर में। फूजी के सॉफ्टवेयर में सेंड करने के बाद मैं इमेज को खोल लेता हूँ रिफ्रेश करके। अब जो ठीक वाला इमेज है उसको मैं 8:10 में लैंडस्केप में ले आके इसको मैं जूम कर दूंगा। सबसे पहले तो क्रॉप कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, अपने आप जूम हो जाएगा। ये जूम हो गया है। और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी एडजस्ट कर लेना है, राइट मार्कर डाल देना है और सुपाइन नीचे लिख देना है, इस प्रकार से दोस्तों। सुपाइन आ गया। अब आप इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेस्ट सुपाइन। तो इस प्रकार से हम लोग का चेस्ट एक्सरे बच्चों का कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ।